Assalamu alaikum and good day, dear students. I am Amir Hafiz Malik and I welcome you to one more exciting online lecture. Today my topic is critical reading and I'll be focusing on all the possible effects of critical reading. I hope you will be enjoying this lecture. So get ready for one more exciting lecture, and before I start my lecture, I would request you to take one notebook and a pen so that you can note down the most important points of this lecture. So let's start. First of all, I would love to discuss the lecture outline with you. Number one, I would be talking about critical reading concept. Number two, why critical reading, what are the reasons and what is the purpose of using critical reading in reading skill. Number three, what is critical reading, the definition of critical reading. Number four, how to be a critical reader. Number five, critical reading skills. Number six, conclusion, the summing up. And number seven, examination questions and some of the possible interesting activities. First of all, let's look at the concept of critical reading. Reading critically does not necessarily mean being critical of what you read. Critical reading means reading with the goal of finding a deep understanding of the material you read. Yes, I would love to talk about two things. Number one, let's make clear that reading critically does not mean being critical. This means that you are not reacting or acting as a critic. You're not looking at the positives or the negatives of the material you are reading or the text. What I mean by this is that critical reading means reading with the goal of finding a deep understanding. Yes, once we want to have a deep understanding of the material we read, we deal with critical reading. So we look at what is there in the text. I hope with this concept in mind, we can move forward to the other relevant aspects. So make it clear that reading critically is not being critical but having a deep understanding of the text. जी हाँ, critical reading का concept हमें बताता है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई नाकिद बन जाएंगे, आप कोई नक्काद बन जाएंगे, आप कोई तनकीद निगार बन जाएंगे. आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, खूबियाँ और नकायस बयान करना नहीं होगा, बल्कि क्रिटिकल रीडिंग का मतलब ये है कि आप गहराई से समझ पाएंगे और समझा पाएंगे उस मवाद को जो आप पढ़ रहे होंगे. सो क्रिटिकल रीडिंग के अंदर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है. जो मवाद आपको दिया जाता है आप उसे मुकम्मल तौर पर समझ पाएंगे तो आप क्रिटिकल रीडर बन पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई क्रिटिकल रीडिंग. सो ओवर हियर आई विल बी डीलिंग विद द purpose or the reasons why critical reading is important, why to use critical reading in reading skill. Critical reading enables to reflect on what a text says, what it describes, and what it means by analyzing the style and the structure of writing, the language used, as well as the content. So there are some very important points to focus on and I would be dealing with them one by one. Number one, it enables to reflect on what the text says. So if critical reading is being used, it means that our focus is on what the text says. So what is there in the text, we get it through critical reading. Number two, what it describes. Yes, there are certain details of an aspect, of a theme, of a story, of a point, of an idea, of a thought that is described. So therefore it deals with describing, which is detail of the concept or the idea shared by the writer. Number three, what it means. Yes, what are the meanings being conveyed by analyzing. Number one, the style. So what is the style of the writer? Is it humorous? Is it realistic? Is it critical? So what is the style of the writer in that? And the structure of the writing. What structure has been adopted? This is very important for critical readers to understand that there is a style of the writer. So for example, Shakespeare is different from Christopher Marlowe. Christopher Marlowe is different from
any other writer. So every writer is an individual with a specific and individual style. Number two, the structure of writing. Yes, there are different structures of writing, and through critical reading, the readers come to know that what is the structure of the writing. Number three, the language used. We all know that every writer has specific expression. One more time, I would love to quote William Shakespeare that at the end of one scene, he uses a couplet to close it down, and that indicates now that one act is going to end. Yes, language is very important for certain writers, and that becomes their brand as well. For example, Francis Bacon, his language is different. Christopher Marlowe, his language is very different. As a poet, Geoffrey Chaucer has a different language. John Keats has a different language. John Donne has another language. So in prose, poetry, we find different writers by using different words. Finally, the content, the material they deal with, that is very important. जब हम वाई क्रिटिकल रीडिंग की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम में क्रिटिकल रीडिंग की सलाहियत होगी तो हम नंबर एक ये जान पाएंगे कि इस टेक्स्ट में मुसन्निफ ने कहा क्या है। नंबर दो, उसने डिस्क्राइब यानी बयान क्या किया है, किस चीज़ की वजाहत और तफसील हमें पेश की है। नंबर तीन, व्हाट इट मीन्स, उसके कहने का मकसद क्या है, वो क्या बात हम तक पहुंचाना चाहता है, क्या वो कोई तारीख हम तक पहुंचाना चाहता है, क्या वो हक़ाइक़ हम तक पहुंचाना चाहता है, क्या वो अपनी तंज़ हम तक पहुंचाना चाहता है, क्या वो हमें ये दिखाना चाहता है कि किस तरह किसी बात को हम फ़नी या मज़ाहिया अंदाज में पेश कर सकते हैं, क्या वो मेटाफिज़िकल स्टाइल अपनाता है, क्या वो नेचर को सामने आइडियलाइज करके चीज़ें बयान करता है, क्या वो अपने स्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ या गहराई लेकर आता है। बाय एनालाइजिंग द स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, जी हाँ, हर मुसन्निफ का, चाहे वो नसर निगार हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो अफसाना निगार हो, चाहे वो ड्रामा निगार हो, चाहे वो नावल निगार हो, तो उसका अपना एक ख़ास अंदाज़ होता है, वही उसकी पहचान होता है। जैसे विलियम शेक्सपियर, जैसे जॉन डन, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, जैसे जॉन कीट्स, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, ये जितने मुसन्निफीन हैं, जब आप इनका काम और कलाम पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इन सब के स्टाइल एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, और कहा यह भी जाता है स्टाइल इज़ द मैन। अब अगली बात, द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग। जी हाँ, हर तहरीर का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम अफसाने की बात करें तो वो शायरी नज़म से मुख्तलिफ है, अगर हम फ्री वर्स या आज़ाद नज़म की बात करें तो वो नावल से मुख्तलिफ है, अगर हम नावल की बात करें तो वो ड्रामा से मुख्तलिफ है। अगली बात, द लैंग्वेज यूज्ड, किस तरह की ज़ुबान यानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, क्या डिक्शन है, बिल्कुल सिंपल है, मेटाफोरिकल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया है, कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर लिया गया है, कंटेंट यानी मवाद क्या पेश किया गया है। तो ये सारी बातें जो हैं वाई क्रिटिकल रीडिंग के अंदर हम कवर कर लेते हैं कि क्यों क्रिटिकल रीडिंग करके हमें फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा, टेक्स्ट क्या कहती है, कैसे वजाहत करती है, स्टाइल क्या है, साख्त क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लैंग्वेज अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए गए हैं, और मवाद को किस तरह से पेश किया जाएगा। तो अगर हम क्रिटिकल रीडर होंगे तो हम इन चीज़ों को जान पहचान पाएंगे, वरना सिर्फ हम पढ़ लेंगे और फिर बात ख़त्म हो जाएगी। Let's move on to the next point, which is what is critical readings. Over here, I would be talking about the definition of critical reading. This is highly important because it will give you a definition, and with the help of definition, you will not only be able to understand what is critical reading, rather you will be also able to apply critical reading on the text you read. So let's go with what is critical reading, or the definition of critical reading. Critical reading means engaging in what you read by asking yourself questions such as what is the author trying to say, or what is the main argument being presented. So yes, over here we'll be focusing on two major points. If you are a critical reader, you will be focusing on number one, questions in your mind. So with the text in your hand, it raises certain questions, just like what is the author trying to say. So you focus on the author's message. And number two, what is the main argument being presented? This focuses on the style of presentation, which we have already discussed in why critical reading. So you get number one, the message, and number two, you get the style, the way, the manner of presentation. And if you are a critical reader, it helps you a lot if you have these two in your hands. Next, critical reading involves presenting a reasoned argument that evaluates and analyzes
what you have read. So if you are a critical reader, you can have the quality of reasoned argument that evaluates and analyzes what you have read. So you are in a position to share, to inform, to express, and tell others that look, this text present this argument in this style. And so therefore the text gives you some message that is very important. Being critical therefore in an academic sense means advancing your understanding. This is very important. In reading skill, we have always focused on getting meanings from the text. So as a critical reader, you get advanced understanding. I have already discussed it in the previous point when I said you get deep understanding. So that is exactly the advanced understanding, and with the help of understanding you can express ideas to others. You get information from the text and you can pass it on to others because you understand the message, the style, the language and the structure of the text. आइए अब हम बात करते हैं व्हाट इज क्रिटिकल रीडिंग, यानी क्रिटिकल रीडिंग क्या है। इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा जब हम क्रिटिकल रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में सवाल होते हैं और हमें क्रिटिकल रीडिंग के ज़रिए इन सवालात के जवाब मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कि मुसन्निफ क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर हम क्रिटिकल रीडर हैं तो तभी हमें पता चल पाएगा, या फिर इस सवाल का जवाब हमें मिल पाएगा कि इस कहानी में, इस टेक्स्ट में, इस रिटन मटेरियल में कौन सा आर्ग्यूमेंट पेश किया गया है, किस नुक्ते पर बात की गई है, क्या दलाइल पेश किए गए हैं, अपनी बात की वजाहत किस तरह से की गई है। तो क्रिटिकल रीडिंग का मकसद ये होता है, क्रिटिकल रीडिंग के कॉन्सेप्ट में ये बात हमें वाज़ेह हो जाती है कि जब आप क्रिटिकली रीडिंग करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि रीजन्ड आर्ग्यूमेंट यानी किस तरह से दलील से बात की गई है, और फिर आप उस आर्ग्यूमेंट को जायज़ा ले सकते हैं, उसका तज्जिया कर सकते हैं, उसके प्लस एंड माइनसेस यानी उसकी खूबियां और खामियां आप बता सकते हैं, आप एक अच्छे तज्जिया निगार हो जाते हैं। सो क्रिटिकल अगर हम एकेडमिक सेंस यानी तालीमी लिहाज से देख लें तो इसका मकसद ये होता है कि आप एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग यानी बहुत ज़्यादा आपको समझ आ जाती है टेक्स्ट की, और आपको समझ आ जाती है क्या पैगाम ऑथर ने दिया था, क्या आर्ग्यूमेंट उसने पेश किया था, क्या अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे, क्या टेक्स्ट स्ट्रक्चर उसने इस्तेमाल किया था। और यूं इस अंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा आपको ये होता है कि आप दूसरों को समझा सकते हैं उस टेक्स्ट में क्या था, और यही क्रिटिकल रीडर और एक आम रीडर का फ़र्क बनता है। माई नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू बी अ क्रिटिकल रीडर। अ क्रिटिकल रीडर reflects on. So if you are a critical reader, you are not a common reader, you are not a simple reader, rather you are reflecting on 3 points. Number 1, what the text says, number 2, what the text describes, and number 3, interpretation of the text. So these are very important points, and these can be learned with following points. Number 1, prepare to become part of the writer's audience. This is very important that you are involved in the text and you are just like walking with the writers, walking with the writer's argument, walking with the writer's message. So if you are a part of the writer's audience, you are moving with the writer. Number 2, prepare to read with an open mind. Yes, this is very important. Your mind should be open. This means that you have the capacity to take the message, understand the message, and number 3, reproduce that message. Number 3, read slowly and carefully. Yes, do not read very quickly. Over here, I would like to quote the example of skimming and scanning. You're not rapid reading. You're not doing rapid reading. You're not quickly reading the text. So, in critical reading, if you are a critical reader, or if you want to be a critical reader, you have to slow down your pace of reading. This will give you more time to read, and carefully. Yes, by carefully I mean that you would be taking more time of understanding. Number 4, make notes. So good readers always make notes. Number 5, be able to use your own examples and compare and contrast with other writing. This is very useful. As a critical reader, you can take one example, one idea from one text, and then you can compare and contrast it to other texts. So this is advantage of being a critical reader. Number 6, be able to fully analyze the text and state a meaning for the text as a whole. Yes, you can overall give an impression about the text because you read it from A to Z, from first word to the last word. So therefore you are in a position not only to analyze it,
rather convey the meanings that has been conveyed as a text. आइए अब बात करते हैं कि एक क्रिटिकल रीडर कैसे बना जा सकता है। तो एक क्रिटिकल रीडर का आम रीडर से 3 बातों का सबसे पहले फ़र्क देख लीजिए। एक क्रिटिकल रीडर को ये बताना होता है कि टेक्स्ट क्या कह रही है। नंबर 2, उसे ये बताना होता है कि किस बात की, किस आर्ग्यूमेंट की वजाहत की गई है। और नंबर 3, उसे तशरीह करना होती है, उसे मुख्तलिफ एंगल से उस टेक्स्ट को समझना और समझाना पड़ता है। इसके लिए चंद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, आपको राइटर की ऑडियंस बनना पड़ेगा, यानी उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। नंबर 2, आपको अपने जहन को वसी करना पड़ेगा उस रीडिंग के दौरान, तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे और ज़्यादा समझा पाएंगे। नंबर 3, आपको रीडिंग की रफ्तार थोड़ी कम करनी होगी, आहिस्ता करनी होगी और मोहतात अंदाज से पढ़ना होगा ताकि आप साथ साथ समझते भी जाएं बातों को। नंबर 4, आपको नोट्स बनाने होंगे और ये आपके लिए हमेशा मुफीद और फ़ायदेमंद साबित। नंबर 5, आप अपनी एग्जाम्पल्स, अपनी मिसालें भी दे सकते हैं और फिर इस एक टेक्स्ट की रीडिंग को आप दूसरी टेक्स्ट के साथ मवाजना भी कर सकते हैं। नंबर 6, आप इस काबिल हो सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर आप टेक्स्ट का तज्जिया कर पाएँ और उसमें जो मुकम्मल तौर पर, मजमूई तौर पर आपको आइडियाज़ शेयर किए गए हैं, जो मीनिंग शेयर किए गए हैं, आप उन्हें समझ और समझा सकते हैं। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को नोट करके या अप्लाई करके आप एक अच्छे क्रिटिकल रीडर बन सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट critical reading skills. There are certain skills which a critical reader needs to have, and these are: critical reading involves using logical and linguistic skills. So there are 2 types of major skills that are involved in critical reading. One is logical, like I have already talked about, having the reason skill, the logical argument style, and number 2, linguistic skill that deals with the language and the structure of the text. Here are some of the important points that can help you to understand critical reading. Number 1, identify the author's thesis is a good place to start. So first of all, start with the thesis. Author thesis means the major idea of the text. This will help you to take a very good start. Number 2, grasp how the author intends. So what is the intention? What is the approach? What is the aim and objective of the writer through this text? Number 3, know the writer's claim. What is the writer trying to convey? Number 4, see the evidences provided, the example, the data, the graph that has been included in the text. Look and focus on the evidences provided by the writer in that text. Number 5, find the logical links that convinces the reader of the coherence of the author's argument. Yes, you have to have the quality of having to know the logical links. Yes, there are logical connection between ideas, like in the general structure we say that there is a beginning, middle and end. So how the idea begins and how it moves on and how it ends or concludes. So what is the author's sequence of the argument? Number 6, uncover the lapses in the text. If you find some weaknesses, if you find some defects in the text, as a critical reader you are able to point them out. Number 7, use of previewing skills, that is before reading, looking at the title or the author's name and style, then the purpose or the theme. So you are in a position to, before you actually complete your reading, you have certain questions in your mind, and by focusing on examples like title, authors, purpose, style and content or theme, you can easily have some of the understanding before you actually read. Number 8, use of reviewing skills. This is after reading and the question answered you can find. So after reading there were some questions which were answered and some were left unanswered, like in number 6 I have talked about the lapses. So after completing your reading, in the review you can find out the qualities and the defects of the text. अब कुछ महारतों की ज़रूरत होती है जो हमें क्रिटिकल रीडर बनाती हैं, और इनमें 2 बड़ी अहम महारतें हैं। पहली लॉजिकल स्किल्स होते हैं और दूसरे लिंग्विस्टिक स्किल होते हैं। लॉजिकल से मुराद ये है आपको दलाइल का बात पेश करने का अंदाज़ आना चाहिए, और लिंग्विस्टिक में आप लैंग्वेज से डील करते हैं, स्ट्रक्चर से डील करते हैं, कंटेंट से डील करते हैं। तो कुछ बातें ज़रूरी हैं, तो आइए वो देखते हैं क्या हैं। पहली बात यह है कि आपको आथर का थीसिस यानी मेन थीम पता होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट कर लें कि टेक्स्ट का थीम क्या है, तो बड़ी आसानी से आप बाकी रीडिंग कर सकते हैं। मुसन्निफ के इरादे को पहचान लें तो भी आपको आसानी से टेक्स्ट समझ आना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, वो क्या कहना चाहता है, उसका दावा क्या है, वो किस बात की तरफ आपको लेकर जाना चाहता है, ये समझ लीजिए। नंबर 4, क्या एविडेंसेस यानी गवाही, शवाहिद, वजाहतें, तफसील
अपनी बात को साबित करने के लिए मुसन्निफ ने क्या तरीका इख्तियार किया है, क्या आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं, वो भी आपको जज करने का आइडिया होना चाहिए। नंबर 5, लॉजिकल लिंक्स क्या है उस टेक्स्ट के अंदर, ऑथर ने मुसन्निफ ने किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट्स को जोड़ा है आपस में, पहला क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा, आखिरी क्या था। नंबर 6, अगर कुछ खामियां रह गई हैं उस टेक्स्ट के अंदर तो वो भी आप देख सकें। नंबर 7, बिफोर रीडिंग स्किल आपके पास होना चाहिए, पढ़ने से पहले आपके जहन में सवालात होते हैं, आप उन्हें रख के चलते हैं और इनका आइडिया लेने के लिए आप टाइटल देख सकते हैं, आप मुसन्निफ को देख सकते हैं, कौन है, किस तरह का आमतौर पर लिखता है, क्या पेश करता है, फिर उसका मकसद क्या है इस तहरीर का, या क्या हो सकता है, इस तरह से थीम, मौजू उसने क्या चुना है, उसका आइडिया क्या है इस टेक्स्ट के पीछे। और आखिरी बात यह है कि रिव्यूइंग स्किल पढ़ने के बाद इसे आप इस्तेमाल करते हैं तो रिव्यू में आप बता सकते हैं कि आपके कौन से सवालात के जवाब आपको मिल गए और कौन से जवाब आपको नहीं मिल पाए। So finally we move to the conclusion. Critical reading is exercising your judgment about what you read. So you have the quality of judgment through critical reading and you exercise that, you apply that and you find what is there in the text. By critical reading, the reader can read, understand, interpret and analyze the text. So you have this quality as a critical reader that number 1, you can understand what is there in text, interpret. Yes, you can read, you can understand, interpret, analyze. You can have 4 skills: read, how to read, understand what is there, you understand, interpret, give further details of that, and finally analyze the text, the qualities and the defects. Critical reading is the art of understanding the text. So summing up is, so the conclusion is that critical reading gives you the ability to the art of understanding a text. Yes, it tells you how much you understand. When reading critically, number 1, do not be critical only. So you don't have to look for the weaknesses and qualities of the text. Target deep understanding. Yes, look at the complete understanding. So आइए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है क्रिटिकल रीडिंग। ये आपकी जजमेंट पावर है, आपके रीडिंग करते हुए किस तरह से एक टेक्स्ट को जज कर सकते हैं। नंबर 2, आप पढ़ सकते हैं, आप उस टेक्स्ट को समझ सकते हैं, आप उसकी मज़ीद वजाहत तशरीह कर सकते हैं और आप उसका मुकम्मल तज्ज़िया कर सकते हैं। ये 4 खसूसियात क्रिटिकल रीडिंग आपको देती है। और आखिर में निचोड़ ये है कि क्रिटिकल रीडिंग महारत है टेक्स्ट को समझने की। जब आप क्रिटिकल रीडिंग कर रहे हो तो 2 काम आपने करने हैं कि आपने सिर्फ नकाद नहीं बने रहना, और नंबर 2, मुकम्मल तौर पर उस टेक्स्ट को समझना आपका मकसद या हदफ होना चाहिए। Here are some of the possible examination questions. Number 1, what is critical reading? Question number 2, why to read critically? Question number 3, how to be a critical reader? Question number 4, critical reading skills. And question number 5, practically apply critical reading to a text. Finally, let's move to critical reading activities. Activity 1 is do critical reading of a short story. You can take a short story whether from your first year English course or graduation level or the undergrads program or even from master level programs. Anywhere you find an English short story, take that and try to apply critical reading to that. Now, activity number 2, critically read a poem. So take a poem and critically read it, understand it, analyze it and interpret it. By doing that activity, you can have a very good skill of critical reading. Finally, reading resource, Smart Communication Skills and Language Skills by Professor Amir Hafiz Malik, page 151 and page 152. So for deeper understanding of this concept, please study the pages from my book. I hope you would have enjoyed this lecture. Thank you very much for your patient hearing.